Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to discuss or start a very new unit of your chemistry, that is acids, bases and salts. We are having taste buds in our tongue. उसके बारे में बायोलॉजी में आप वाकिफ हुए होंगे. Different taste buds give us different sensation of different tastes. जैसे स्वीट, सोर, बिटर, ठीक, और साल्टी. या कोई चीज़ जो होती हैं तो वो नमकीन होती हैं, या मीठी होती हैं, या वो खट्टी होती हैं, या वो तीखी होती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर during the development in the chemistry or development of the branch of science that is called the chemistry, क्योंकि chemistry is related with the studying the nature, the composition of the substance. जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे सब्सटेंसेस को डिफाइन करते हैं तो हम डिफरेंशिएट हम ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट भी कर सकते हैं. देयर सम सब्सटेंसेस आर सोर इन टेस्ट, सम सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट, सम सब्सटेंसेस आर सोर, बिटर, साल्टी, स्वीट. ठीक, वी कैन डिफरेंशिएट द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज. बट केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू knowing the composition of the substance, knowing the reason behind the soreness of the substance, the bitterness of the substance, the saltiness of the substance, or the sweetness of the substance. That how and why are the substances having different tastes. In this unit we will discuss three types of these tastes, three tastes. That is sour, bitter and salty. Sour, bitter and salty. Why substances are sold? From the very early period of this early development of the chemistry, it has been observed that the substances which are sour in taste, or those substances which we call as acids today, these are the substances which are sour in taste. The acids were differentiated on the basis of their physical or observable properties. That one of their property is that their taste, and acids were having acids were the substances that were sour in or that are sour in taste, and bases are the substances that are bitter in taste. So substances were classified into acids and bases earlier on the basis of their physical property, that is on the basis of their tastes. Those substances which taste sour were called as acids, and the substances which taste bitter are called as bases. So in today's period as well, we observe that acidic substances are really sour in taste and basic substances are bitter in taste. Then after the development in the science and the chemistry, but I different techniques to differentiate between acids and the bases, such as indicators, different types of synthetic and natural indicators are used करना और ये different colors च देवान तथ मज acids and bases. Another important question is that why we are going to discuss these acids, bases and salts. Why? Every unit, every topic of the science is related to our daily life. It is not because of the passing examination of class 10th that you have to prepare acids, bases and salts. Not for that. It is side objective. The main objective is that these acids, bases and salts are having or playing an important role in our daily life. एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. कभी कभी स्टमक में क्या होता है, एक दर्द सा पैदा होता है, जलन होती है, जलन सी पैदा होती है. तो कोई कहता है, मतलब फिर हम अपनी लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं कि मिलो म्याद तलने. ठीक, एट दैट टाइम कोई एडवाइस करता है कि आप जाकर थोड़ा सा वो से कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सोडा, उसको थोड़ा सा पानी में मिलाओ और या ठंडा दूध पियो, ये ठीक हो जाएगा. यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए जहन में कि मैं अगर म्यादस ओस तलान सोडे आब सत क्या गो अत. ठीक, या कभी कभी दांत में दर्द होता है तो फिर क्या कहते हैं कि जल्दी से जाकर ब्रश कर लो. अगर ऐसा नहीं है तो अगर मतलब वो ब्रश यानी सोप अवेलेबल नहीं है तो जाके वहाँ पे नमक है ना, नमक पानी में या नमक हाथ में ले लो, इन पे रखो, थोड़ी बहुत सूरत हो जाएगी. तो इन चीज़ों से हमें यह देखना है that why are we using
sodium hydrogen carbonate for treating acidity. अभी आज फेसबुक पे डिफरेंट जो मेवे होते हैं, अब जो हमारे मेवे तैयार हो रहे हैं उनकी डिजीज़ अब हम अपलोड कर रहे हैं कि इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ हो रही है, या हम बहुत सारे खाद या दवा इस्तेमाल करने के बाद भी पैदावार कम हो रही है. तो हम कोस रहे हैं एक डिपार्टमेंट को दैट इज़ रिलेटेड विद दिस फील्ड कि वो हमारे बगीचों में अपनी ड्यूटी अंजाम देने के नहीं आते. उनकी ड्यूटी क्या है? उन्हें तो वहाँ पे आकर शकदरी करेंगे. उनकी ड्यूटी ये है कि उन्हें सॉइल टेस्टिंग करनी है. सॉइल टेस्टिंग मीन्स कि हर एक प्लांट एक डिफरेंट मीडियम में ग्रो करता है. डिफरेंट मीडियम मीन्स कि मीडियम कोता एसिडिक या कोता बेसिक या कोता साल्टिक या न्यूट्रल. There is one more term that is neutral, that is neither acidic nor basic. तो यही चीज़ें हमें पढ़नी है कि एसिड्स और बेसिस का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल है. हमें दूध होता है घर में, अच्छा दूध ज़वराऊँ, ठीक, तो वो उसकी जो टेस्ट है उसको टेस्ट चेंज करना है. तो वो टेस्ट कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है, ठीक, वो भी हमें इसमें पढ़ना है. इसी तरह बेसिस का क्या रोल है. साबुन करा यूज, जिस पर रेशी देवा टॉप, ठीक है. जब कोई चोटी काटती हैं या बी कोई कभी काटती हैं तो क्या जल्द कहते हैं कि इस पर सोप मारो, तो असर क्या होता है, वाई, ठीक. दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू फाइंड आंसर by after discussing this acid, bases and salts. And salts also play an important role in our daily life, जो कि कॉमन साल्ट आप यूज़ भी करते हैं, टेबल साल्ट से कहते हैं. और डिफरेंट साल्ट्स में लास्ट में पढ़ने हैं, वो भी जैसे POP आप यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, या जिप्सम यूज़ करते हैं. तो उन साल्ट्स के बारे में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. लेकिन स्टार्ट हमें करना है यहाँ से, व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस. पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या हो तो बेस क्या हो. इसका है को पर्सन का एसिड क्या हो तो बेस क्या हो. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. इसके लिए क्या याद रखना है आपको, देयर आर डिफरेंट थ्योरीज रिलेटेड द एसिड्स एंड द बेसिस. डिफरेंट theories they define acids and bases. They define substances or differentiating substances on the basis of acids and bases. One of the earliest theory of acids and the bases is Arrehenus theory, जो कि आपको अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट्स कहीं पढ़ा होगा 7th 8th में भी, तो Arrehenus वहाँ पे आपने डिस्कस किया होगा. Arrehenus का नाम आपने सुना होगा. Arrehenus theory is the one of the basic theory related to the acids and the bases. It was put forth by Arrehenus in 1887. 1887. His name was Arrehenus. Arrehenus in 1887 put forth a theory regarding or related to acids and bases. And he defined acids and bases. How he defined it? He was given Nobel Prize for this theory in 1903. He was given Nobel Prize, जो आपको पता है कि हाईएस्ट अवार्ड, ठीक, Nobel Prize in Chemistry. Now, let us come to the point. What is acid according to Arrehenus? Or what is base according to Arrehenus? According to Arrehenus, acid is a substance. Acid is a substance which when dissolved in water, can dissociate. Which when dissolved in water, ये लिए आप dissolve करना, ये क्या चीज़ dissociate, कैसे break, ठीक, dissociate to yield hydrogen positive ions, that is H positive ions. जो कि H positive ion यानी इसे proton. H positive ion means it is devoid of electron now. Which not electron موجود कि it is only H positive that has lost its electron. It is a proton now, only single proton. ठीक? This proton cannot exist
of its own, till exists at water, it is attached to the water, it gets attached to the molecule of water and forms, और यहाँ मैं लिखूंगा मैं वो hydronium ion. Hydronium ion. That is H3O positive. H3O positive. जब हम केमिकल कम्बिनेशन पढ़ते हैं या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, ऑक्सीजन की दो ही वैलेंसी हैं तो H2O इज पॉसिबल, देन हाउ इज H3O पॉजिटिव पॉसिबल? ठीक, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग की और एक टाइप पढ़नी है. वो पढ़ने से पहले आप, क्योंकि अभी हमें और एक थ्योरी उसमें भी वो आता है, वी विल डिस्कस दैट. यहाँ पर आपको ये पढ़ना है, ये देखना है कि H पॉजिटिव आयन्स गसान अटैच, ठीक, कथ से H2O molecule से, and this is H3O positive. H3O positive means this H2O molecule is attached with, यानी इसके साथ अटैच है एक H positive आयन जो ये किसी भी वक्त वापस डोनेट कर सकता है. तो any substance यूस आपस में डिसोसिएट गस और पत गस कर दी तौर H positive आयन्स कर प्रोड्यूस. H positive आयन means H positive आयन्स कर ज्यादा प्रोड्यूस, ठीक. H positive अथेकन मुख्तलिफ आयन प्रोड्यूस गशित, मगर H positive या हाइड्रोनियम आयन्स बनाना ज्यादा, that substance is called acid. तो सिंपल वर्ड्स में आप याद रखिए, acid is a substance which when dissolved in water dissociates to yield hydrogen ions or H positive ion, or we can call it as hydronium ion, H3O positive. अब सब एसिड्स पे डिपेंड है कि कोई एसिड स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है. स्ट्रांग एसिड गो सुई एसिड युस आपस में ज्यादा हाई पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस कर, और युस कम H पॉजिटिव आयन्स हे प्रोड्यूस करे, दैट इज वीक एसिड. इतने ही फर्क है, स्ट्रांग और वीक एसिड में यही फर्क है. द एसिड व्हिच डिसोसिएट्स completely to form more H positive ions is called strong acid. The acid which partially dissociates, युस complete dissociate गसान के सारी molecules में ब्रेक गसान के, and forms lesser amount of a lesser number of H positive ions is weak acid. लेकिन acid है, acid हर वो substance है which when dissolved in water produce H positive ions or hydronium ions. For example, hydrochloric acid, HCl. When HCl is dissolved in the water, it forms H3O positive plus Cl negative. यहाँ पर दो तरह के आयन्स बनते हैं. It is H3O positive hydronium ion. Hydronium, that means this acid में क्या करते हैं, lose proton, यानी इम H positive ion वाटर में, इतनी बने ये hydronium ion, पानस होत पास कुन क्लोरीन ion यूत, ठीक. This substance, अगर ये dissociate गशित आपस में H positive ion है provide करित, it is called acid. Then it is called acid. इसी तरह H2SO4 when dissolved in water can give, it will form H3O positive plus SO4 negative ions. SO4 negative ions. With this substance which dissociates in water to yield H positive ions, that is called acid. That is called acid. And base, according to Arrehenus, base is a substance which when dissolved in water, according to Arrehenus, ये Arrehenus की ऐसे बेस definition है, ठीक है. अभी हम Arrehenus पढ़ रहे हैं, इसलिए इसी के साथ लिखना. Base is a substance which when dissolved, which can dissociate in water, simply in water to yield OH negative ions, that is hydroxide ions. Hydroxide ions क्या है फार्मूला, OH negative ions, ठीक. For example, sodium hydroxide, that is base, when dissolved in water dissociates to give Na positive ions plus OH negative ions. Was such a substance which when dissociates when dissolved in water dissociates to yield OH negative, that is hydroxide ion, that is called Arrehenus base. According to Arrehenus, acid is a substance which when dissolved in water it dissociates to yield hydrogen H positive ions, or we can say them as hydronium ions, because H positive ions get attached to the water molecule and form hydronium H3O positive ion.
and base is a substance which can dissociate in water to yield OH negative ions. For example, sodium hydroxide is a base because when it is dissolved in the water, when it gets dissolved in the water, it dissociates to form Na positive ion plus OH negative ions. Arrehenus theory suggests that or states that acid is a substance which yields hydrogen positive ions in the water. Base is a substance which yields hydroxide ions in the water, and the strength of the acids and the bases depends upon that how much ions do they produce in the water. In the acidic substance, kati hydrogen ions can produce in the water, so what is a strong acid? Base. Kati hydrogen ions can produce in the water, that is called a strong base. Go use completely ionized gas water, so go to strong acid and strong base. Use acid and base partially ionized gas water, so go to weak acid and weak base. This is Arrehenus theory of acids and bases, and by tomorrow, inshallah, we will discuss other two theories. There is Bronsted-Lowry theory or Lewis theory of acids and bases. So that ताकि as गशी वार clear that कथ substances हेको इस वन acid सिर्फ कोनो सुई substance acid की थी वार या लिखने से ये substance hydrogen ions दी या सुई substance कोनो acid base के ये substance produce कर hydroxide ion. बल्कि acids और bases में वो substance भी आते हैं जिनमें hydrogen या hydroxide ions produce नहीं होते हैं. वो हम इंशाल्लाह कल और जो थ्योरीज पढ़ने के बाद जब डिस्कस करेंगे तब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह कि किस सब्सटेंस को हम एसिड या किस सब्सटेंस को हम बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं. सी यू अगेन टुमारो. गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम.